All right, so we are at 4:05. I'll not waste any more time. We'll start with this event. Heyo Wali Diwali is what we have named it. So, first of all, sir, hello, namaste, everyone. Thank you so much for joining on time. First 5 minutes are very important. It's a long wait, I know, but it is definitely important for to wait for everybody. एक बार सब लोग आ जाते हैं तो अच्छा लगता है community meetup में, right? Sure. I'll speak a mix of Hindi English. We will try to maintain it for everybody. So I'll try to repeat things overall. We have participants from north, east, west, south of India. तो कभी हिंदी चलती है, कभी इंग्लिश चलती है. We try to maintain our best balance. तो हो सकता है थोड़ी हिंदी बोली जाए, हो सकता है थोड़ी इंग्लिश बोली जाए. A little bit of English too. And yeah, that's how it will be. All right, so we'll get started. This is the Heyo community meetup. दशहरा बीत गया है, दिवाली आने वाली है, and festive season is at its peak in India. In these 3 months, October, November, December, you have three important festivals which are celebrated across the country. दशहरा सबसे पहले October, then you have Diwali in November, and Christmas आएगा आपका December में. And in this OND, October, November, December, businesses try their best to increase their sales, do their best marketing, everything. मतलब इस समय businesses की boom होती है. So we thought कि जब दिवाली हम मिलने जाते हैं, दिवाली का culture, as per the culture of Diwali, you go and meet Diwali, right? आप लोगों के घर जाते हैं, जैसे ईद मिलने जाते हैं, वैसे ही दिवाली मिलने जाई जाती है. So इसी तरीके से हमने सोचा कि the customers that we value so much, आप लोगों के साथ थोड़ा समय बिताया जाए इस community meetup में, to have your questions, to give you opportunity to talk to us, and थोड़ा सा जो हेयो के आने वाले updates हैं उनके बारे में बताया जाए. So I'll move on with this. Won't waste a lot of time. Take care. I'll run a poll here for all of you. Please answer that poll. उसको मैं launch कर रहा हूँ. You have couple of questions. आप सभी लोगों से request है. I request all of you to please answer these 2 questions so I can get an understanding कि क्या आप लोगों ने इससे पहले हमसे बात करी है इस तरीके के environment में या नहीं करी है. And जो लोग हिंदी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई डू अंडरस्टैंड. हिंदी इज लाइक हमारी हाफ ऑफ द ऑडियंस हिंदी है, कुछ ऑडियंस इंग्लिश भी है. सो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही बोलूं. अगर पूरी हिंदी बोलूंगा तो कुछ लोगों को समझ शायद नहीं आएगा. पूरी इंग्लिश बोलूंगा, इफ आई से ऑल इंग्लिश, सम पीपल माइट नॉट अंडरस्टैंड. सो आई विल ट्राई कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्स चले. एंड आई रियली होप दैट यू गाइज अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ व्हाट आई टेल यू. सो इट्स गुड. नाउ वी कैन सी कि काफी सारे लोग हमारे बीच में जिन्होंने हेयो महीने भर से लगभग यूज कर रहे हैं, 3 महीने से यूज कर रहे हैं, 3 महीने से ऊपर से यूज कर रहे हैं. तो दैट्स ग्रेट. काफी लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं. 14 लोग इस समय पहली बार अटेंड कर रहे हैं सीएमयू. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. ठीक है. सो यू विल गेट टू नो हाउ आवर सीएमयू लुक्स लाइक, हाउ वी डू थिंग्स. आई एम कीपिंग द पोल ओपन. माय कलीग हियर Manik will close the poll in some time. ठीक है. So let's get started now. So the first thing I wanted to talk about is what do we have going on today. So पहले सबसे पहले एक छोटा सा सेशन होगा about Heyo Phone, the features जो शायद आप लोगों ने कुछ मिस कर दिए हों, the updates क्या आने वाला है Heyo Phone में, and the future, what is going to happen in the coming couple of months, 2-3 महीनों में. So हरिकृष्ण जी लिख रहे हैं कि we are waiting for WhatsApp integration. मैं इस बारे में जरूर बात करूंगा. मैं जो फ्यूचर वाला पॉइंट है, आई एम कमिंग टू दैट. उस पे व्हाट्सएप इंटीग्रेशन की बात होगी. सो प्लीज होल्ड ऑन टाइट. आई एम कमिंग टू योर पॉइंट ऑल्सो. देन हेयो वाले अवार्ड फ्रॉम आवर यूजर्स. सो वी हैव विद अस सत्यम शुक्ला. he'll turn on his camera when his turn comes, and they are going to he's going to talk about कैसे हेयो हेल्प कर रहा है उनके यूजर्स को. he's also a हेयो पार्टनर, he's also a यूट्यूबर. सो आप देख सकते हैं हेयो का यूसेज ऑलमोस्ट हर जगह है, मतलब फ्रॉम यूट्यूब टू बिजनेस टू प्रैक्टिकल प्रोफेशंस, कहीं भी. Right, and then we have a play and win, a Heyo quiz. 5 questions होंगे. Everybody who has not enabled their chat, जो अभी chat नहीं कर रहे हैं, जिनको कोई issue है उसमें, please sort this out before we move on to the quiz round. Quiz में आप सबको 4 options दिए जाएंगे. उसमें से आपको सही option chat में लिखना होगा. First person to write the correct option will win. My team here will take a note of all of this, and
आफ्टर द इवेंट आपको आपके हेयो वाउचर्स और Amazon वाउचर्स डेफिनेटली मिल जाएंगे. देन वी हैव अ Q&A सेशन, जैसे मैंने बताया था. सो आवर प्रोडक्ट हेड होपफुली विल बी जॉइनिंग अस एंड उनसे आप बात कर सकते हैं, सारे सवाल पूछ सकते हैं हेयो के बारे में. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हेयो फोन योर स्मार्ट बिजनेस नंबर. सो जितने लोग, हम में से काफी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने हेयो ऑलरेडी यूज किया हुआ है. वी कैन सी अ पोल जिसमें से सिर्फ 1% ऐसे हैं जिन्होंने अभी डाउनलोड करना है. सो मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो हेयो फोन क्या करता है. नाउ लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, लाइक 2 मिनट लेके, कि एग्जैक्टली हमारा पर्पस क्या था, हेयो फोन क्यों बना था. अब बिजनेस नंबर विदाउट अ सिम कार्ड. आज की डेट में किसी भी बिजनेस, कोई भी छोटा बिजनेस जो मार्केट में है, वो अपना पर्सनल सिम यूज कर रहा है या एक सिम कार्ड नंबर लेके यूज कर रहा है. दे आर यूजिंग द रेगुलर सिम कार्ड फोन. अपने जो इनके स्टाफ है उनको दिया जा रहा है रेगुलर नंबर. उस सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए भी क्रिएटेड हेयो फोन. सबसे पहले पूरे बिजनेस के लिए एक नंबर मिलता है. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो दिस. अपने स्टाफ के साथ वो नंबर शेयर कर सकते हैं, इसमें स्टाफ को ऐड कर सकते हैं. सेम नंबर से इनकमिंग आउटगोइंग होगी पूरे स्टाफ के लिए. देन यू हैव सेट वेलकम मैसेज, व्हिच मींस यू कैन आल्सो सेट अ वेलकम ग्रीटिंग. एनीबॉडी हु कॉल्स यू विल लिसन टू अ ग्रीटिंग. हेलो हाय व्हाट्सअप आपका, हेलो हाय दिस इज XYZ बिजनेस, हेलो आई एम टॉकिंग फ्रॉम XYZ किराना स्टोर. एनीथिंग यू कैन सेट ओवर देयर. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मेजर थिंग, बिजनेस कॉल्स रिकॉर्ड करना. सो आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी जिन्होंने ये चीज रेज करी, जो इन्होंने मुझे बताया कि आज से पहले क्या होता था, उनकी फिजिकल टीम थी और जब वो रिमोट टीम, मतलब घर बैठ के लोगों को जॉब्स देना चाह रहे थे, वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि सबको सिम पहुंचाना, सब तक सबसे बात करना वॉज वेरी मुश्किल, लाइक टफ. सो इवेंचुअली उन्होंने हेयो फोन यूज किया एंड नाउ उनके ऑफिस से 500-500 किलोमीटर दूर के लोग हैं जो उनकी टीम में है. एंड दे कैन नॉट टॉक एंड दे कैन गेट टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडीज नंबर. एवरीबडी हु इज मैसेजिंग, आई कीप कमिंग बैक टू योर मैसेजेस. एक बार मैं जो आपको स्लाइड्स दिखानी है कुछ उनको कवर कर लूं. मैं आपके सारे मैसेजेस पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं मैसेजेस देख नहीं रहा. आई विल रीड ऑल दीज मैसेजेस, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू एज वेल. सो प्लीज स्टार्ट कीप ऑन मेंशनिंग, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हेयो यूज केसेस. सो बहुत ऐसे केसेस हमने नोटिस किए हैं जहां पे आर कस्टमर्स हैव बीन यूजिंग हेयो फोन बट दे आस्क अस, यार इसका ना और यूज कहाँ कर सकते हैं. ठीक है. मतलब हाउ कैन आई मेक यूज ऑफ इट, व्हाट कैन आई डू, इसको और क्या करा जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो यहाँ पे कुछ ऐसे यूज केसेस हैं विच वी थिंक कि हेयो यूजर्स कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेकिंग डिलीवरी ऑर्डर्स फॉर फॉरगेटिंग आइटम. मान लीजिए आप लोगों का कोई किराना स्टोर है या फिर आप किसी भी अलग तरीके से बिजनेस में डिलीवरीज करते हैं. लेकिन होता क्या है, कई बार ना आप लोग भूल जाते हैं, यार क्या ऑर्डर आया, नहीं लिखा, दिमाग से उतर गया. या स्टाफ ने ऑर्डर लिया, आपके दिमाग से उतर गया, अभी स्टाफ को भी नहीं याद है व्हाट हैपेंड. यू आल्सो डोंट रिमेंबर व्हाट हैपेंड. सो दिस इज वेयर यू कैन कम इन. यू लिसन टू कॉल रिकॉर्डिंग्स and you complete those orders. Not a problem at all. Then you have the next thing. You can have you have multiple numbers for your support staff, right? 3 लोग हैं आपके ऑफिस में, आपने तीनों को अलग अलग नंबर दिया हुआ है. इससे अच्छा है आप सबको एक ही नंबर दो. एज अ कस्टमर इट इज ऑलवेज बेटर दैट आई कॉल वन नंबर. व्हेन यू टॉक टू ICICI बैंक, यू डोंट कॉल देयर स्टाफ, राइट? आप ICICI बैंक का एक कस्टमर नंबर डायल करते हो, ऑटोमेटिकली वो स्टाफ के पास चला जाता है. दिस इज वन यूज केस ऑफ योर. अनदर इज इफ यू वांट अ सेकेंडरी नंबर. आपको सेकंड नंबर चाहिए बट आपको खुद के फोन में नहीं रखना है. यू वांट कि मैं नंबर ले लूं बट मैं टीम को दे दूं. दैट इज अगेन वेयर हेयो फोन कैन कम इनटू द पिक्चर. और जो अभी इस समय का सबसे बड़ा हमारा यूसेज है, ऑल ऑफ यू जितने ही बिजनेसेस हैं यहाँ पे, 25 लोग इन्होंने ज्वाइन किया, 25-26 लोग, ऑल ऑफ यू हैव अ बिजनेस. आप लोग बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ ऑफर्स चला रहे होगे, दिवाली पे डिस्काउंट दे रहे होगे, कुछ ना कुछ. सो उस सब के लिए यू कैन सेट अ वेलकम मैसेज. आप लोगों को बता सकते हो जो भी आपको फोन कर रहे हैं कि हाय, थैंक यू फॉर कॉलिंग XYZ किराना, हमारे यहाँ इस समय 20% डिस्काउंट चल रहा है हर चीज पे. दैट इज हाउ यू कैन यूज हेयो फोन. दीज आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स. बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग खुद भी यूज कर रहे हैं. सो आप लोग का इनमें से कोई यूज केस हो सकता है, आपका इसके बाहर भी कोई यूसेज हो सकता है. हो सकता है कि आप एकदम ही एक डिफरेंट चीज के बारे में बात करो. Q&A सेक्शन में, इस पूरे मीटिंग के, इस पूरे सेशन के एंड में जो Q&A सेशन होगा, वहां पे वी विल अलाउ यू गाइज टू शेयर योर एक्सपीरियंस. सो तब तक के लिए कीप होल्डिंग ऑन एंड लिसन टू वॉट एवर इज बीइंग टोल्ड, सो दैट डाउन द लाइन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दिस सेम थिंग. एंड ऑफकोर्स इस पीटी जितना भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे,
इवेंचुअली जो क्वेश्चन आने वाले हैं लास्ट में क्विज के लिए, जिसमें यू विल बी विनिंग Amazon वाउचर्स, वो इसी में से किसी में से आएंगे. सो प्लीज मेक श्योर दैट you are looking at it very smartly and you remember most of it. Now, in terms of product updates, this is one thing that is why we wanted you here. सबसे पहली सबसे important चीज जो आपको बतानी थी हमें, right? So first of all, we have a new number series. हमने, अगर आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, 073 करके एक नई नंबर सीरीज रिलीज करी थी रिसेंटली, राइट? दिस नंबर सीरीज इज अगेन अ मोबाइल लाइक सीरीज, जैसे 80 है. जैसे ही हमने रिलीज करी, ऑलमोस्ट 4 से 5 हजार नंबर्स विद इन डेज खत्म हो गए. डेज भी नहीं, शायद आवर्स में खत्म हो गए होंगे. एंड इसीलिए वी हैव टू गेट न्यू नंबर्स. तो अभी अगर आप देखेंगे, शायद जो इमीडिएट एक्टिवेशन हो रहा है वहां पे यू माइट नॉट फाइंड इट, बट सून इनफ वी विल हैव अ वेरी बिग पूल ऑफ दिस नंबर, जिससे 73 नंबर, जैसे आप 11 लेते हो, 22 लेते हो, 80 लेते हो, वैसे ही आप 073 ले पाओगे अपने हेयो के लिए, राइट? देन यू हैव, होल्ड ऑन, या यू हैव स्टाफ रेटिंग्स. स्टाफ रेटिंग्स एक बहुत ही रिसेंट फीचर आया है, जहां पे एवरी टाइम आपका कोई भी स्टाफ कस्टमर से बात करता है, एनी टाइम एनी स्टाफ फ्रॉम योर कंपनी, फ्रॉम योर हेयो नंबर कॉल्स अ कस्टमर, द कस्टमर गेट्स अ एसएमएस आफ्टर योर कॉल टू रेट द स्टाफ, टू रेट द कॉल, टू रेट द कंपनी. वहां जाके अगर कस्टमर रेटिंग करता है तो वो स्टाफ की रेटिंग में काउंट होता है. आप अपने हेयो ऐप की सेटिंग्स मेन्यू, इफ यू आर यूजिंग हेयो ऐप राइट नाउ, अगर आपके हाथ में आपका फोन है, यू कैन गो, यू कैन चेक योर सेटिंग्स मेन्यू. उसमें आपको स्टाफ की रेटिंग्स, इंडिविजुअल स्टाफ की रेटिंग्स मिल जाएंगी. कि अगर कस्टमर्स मुझे 4 रेटिंग दे रहे हैं, 3 रेटिंग दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, यू विल सी दैट रेटिंग. उससे आप अपने स्टाफ को बेहतर मैनेज कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे, समझ पाएंगे कितना अच्छा स्टाफ आपके साथ काम कर रहा है, राइट? सो वी विल लुक एट दैट टू. Then the last thing that we have in terms of product updates as of now is GMB ratings from customers. So जो messages जा रहे हैं, जो SMS जा रहे हैं customers को after your call, उसमें अगर वो 4 से ऊपर की रेटिंग देते हैं, अगर वो गुड रेटिंग है तो गुड, एक्सीलेंट, बेस्ट, जैसे भी आप इसको कह लें, वो 4 से ऊपर की अगर रेटिंग देते हैं आपको, सो वो कस्टमर्स को हम आपका GMB पे ले जाएंगे, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे ले जाएंगे. इसके लिए जैसे आपको स्क्रीनशॉट में भी दिख रहा है, आपकी बिजनेस रेटिंग यहाँ दिख रही है, राइट? ये तो ऐप के अंदर है. गूगल माई बिजनेस अकाउंट को आप ऐप के अंदर लिंक करें, सेटिंग्स में जाएं, आपके नंबर के ऊपर जो स्टार आइकन है, उस स्टार आइकन पे क्लिक करेंगे, ऊपर लिंक आप ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल का. जब भी कोई 4 से ऊपर स्टार रेटिंग देगा, वो ऑटोमेटिकली आपके गूगल प्रोफाइल पर चला जाएगा और वहां जाके भी होपफुली वो आपको रेट करेगा. ये सिर्फ 4 से ऊपर वालों के लिए इसलिए है, सो दैट अगर कोई खराब रेटिंग दे रहा है बाय एनी चांस, फॉर एनी रीजन, सो दोज पीपल डू नॉट गो टू योर Google My Business profile and give a bad rating there also. It just stays with you over here. So yeah, this is in terms of product update जो already आ चुके हैं. Now we have the product roadmap. Before we go on over there, let me just look at the chat once. काफी सारे messages आ गए, मुझे एक बार एक chat मैं चाह रहा हूँ देख लूँ. Harikrishna ji is saying rating is amazing, but branding makes us a startup. Of course, of course. So branding is what Heyo Phone also stands for. When you give a professional number out in the market, when it is not a regular mobile number, when people call one number and they can talk to the support team, soon we'll be bringing IVR. You are saying over here in product roadmap, you have the IVR present. With that in the picture, when people press 1 or 2 to talk to sales or support, it will be beautiful. People will look at your startup as a very big brand, a very important brand who is using this level of services. And of course, rating तो is great. Everybody, we all check ratings ना. हम Amazon पे जाते हैं, दिवाली है, हम लोग सामान खरीद रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, वी आर ऑल गोइंग टू Amazon चेकिंग रेटिंग क्या है उस चीज की. So that is happening. ठीक है. Every call you promote Heyo as SMS sender, I think this is not good. We'll definitely take this in the Q&A section. गिफ्ट में क्या क्या है, वील गिव यू Amazon वाउचर्स. उससे आप जो बेटर गिफ्ट खरीदना चाहें अपने लिए, किसी और के लिए, फील फ्री टू परचेज दैट. सो देयर इज दैट. So yeah, few questions are answered. We'll take more in the Q&A. I'm just checking the chat कि बीच बीच में आपको ऐसा ना लगे कि हम बोलते जा रहे हैं और आप चेक कर ही नहीं रहे. So there is that. Now in terms of product roadmap, guys. So अभी तक we have talked about what was the Heyo app. Currently क्या update आए हैं Heyo app, मतलब recent updates that we have brought in. Now what is coming up in the next days? So we are bringing basic IVR, right? We are bringing up to 5 users, 1+4. Single level IVR wherein you can have +1 +2 जैसा आप image में देख पा रहे हैं, right? And approximately the cost price will be somewhere close to 500 to 600, which is very, very, very less, a fraction of cost of
the very big IVR systems that out there in the market. जैसे माई ऑपरेटर जो पेरेंट कंपनी है वो भी बनाती है. सो हमें पता है कि IVR की कॉस्टिंग इज वेरी हाई, बट वी नो कि स्मॉल बिजनेसेस नीड समथिंग इन दिस प्राइस. So we have brought it for you. December 2023 में we have Bharat Agarwal with us, the product manager. Soon in the Q&A section, you can talk to him, ask him everything about basic IVR. You can bombard him with questions. Not a problem over there. You have the iOS app. So जो लोग भी iPhone पे यूज करना चाह रहे थे या उनके फ्रेंड्स को रिकमेंड कर रहे थे, and they were saying यार iPhone पे नहीं है. This app is coming on iPhone very soon in December itself. So stay tuned. Basic IVR or iOS app launch is going to happen in December. So stick with us. This is going to be a very major update for you all. And lastly, काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन डाला है. आई थिंक मेजर क्वेश्चंस जो मेरे चैट में दिखे हैं, व्हाट्सएप. सो व्हाट्सएप इज द बिग थिंग. अभी आप क्योंकि यहाँ पे हैं, जो 20-25 लोग मेरे साथ हैं इस समय, मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूँ व्हाट्सएप के साथ हुआ क्या था. जो लोग 3 महीने से ऊपर हेयो फोन यूज कर रहे हैं, काफी सारे लोगों ने रेट किया था. ऑलमोस्ट 8 से 10 लोगों ने रेट किया था कि हम हेयो फोन 3 महीने से ऊपर रेट कर रहे हैं. आपको पता होगा कि पहले हेयो फोन में व्हाट्सएप चलाया जा सकता था. अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 से 3 महीनों में मेटा, विच इज फेसबुक, विच इज द ओनर ऑफ व्हाट्सएप ऑल्सो, उन्होंने ये सर्विस बंद कर दी है कि वर्चुअल नंबर पे जो SMS OTP, जैसे SMS OTP तो आता ही नहीं है, कॉल OTP भी नहीं आ सकता. अब क्योंकि कॉल OTP बंद कर दिया उन्होंने हर नंबर से, वर्चुअल क्या कैसे भी नंबर से. अगर आप एक लैंडलाइन से, आज की डेट में जो फिक्स लैंडलाइन है, BSNL का नंबर है, MTNL का नंबर है, if you try activating WhatsApp on your landline number today, you will not be able to do it. This has been happening since last 2 months. last 2 महीने से ऐसा हो रहा है. इसकी वजह से ही हमें WhatsApp एज अ सर्विस, WhatsApp बिजनेस एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन एज अ सर्विस कुछ दिनों के लिए स्टॉल करना पड़ा. वी कुडंट डू इट. बहुत सारे हमारे इस 20 से 25 लोगों में हमारे कुछ पार्टनर्स भी हैं जिनको ये पता है स्टार्टिंग से, जो लोग इस बिजनेस में है, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं, जो लोग मेटा के साथ कुछ भी लेवल पे काम करते हैं, रीसेल करते हैं, एड्स चलाते हैं, उन्हें पता है ये प्रॉब्लम है. राइट. एंड यू कैन गो आउट इन द मार्केट, चेक. दिस इज नॉट अ हेयो प्रॉब्लम, दिस इज अ ओवरऑल प्रॉब्लम. कलंदर जी ऐसे कह रहे हैं कि यस यू आर करेक्ट. सो पीपल नो दैट दिस इज अ प्रॉब्लम. तो हम क्या कर रहे हैं, भरत विल टॉक मोर अबाउट इट इन द Q&A सेक्शन, कि हम व्हाट्सएप बिजनेस API, बिकॉज माई ऑपरेटर जो हेयो का पेरेंट ब्रांड है, वो ऑलरेडी एक मेटा पार्टनर है. हम ऑलरेडी व्हाट्सएप बिजनेस API सेल करते हैं. सो जैसे हमने बड़े IVR को उतार के एक एप्लीकेशन में डाल के आपको सर्व किया है, सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च वाले क्वार्टर में होपफुली आपको वो पूरा बड़ा व्हाट्सएप बिजनेस API सेटअप ऐप के अंदर लाके दे देंगे, जिससे आप बल्क मैसेजेस कर सकते हो, मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर पाओगे, चैट बॉट्स बना पाओगे, मल्टीपल स्टाफ सेम नंबर यूज कर पाएगा. मतलब पॉसिबिलिटीज विल बी लिमिटलेस. तो ये व्हाट्सएप बिजनेस API, आई होप जो लोग यहाँ पे हैं जिनका क्वेश्चन रहा है अभी तक, these people will be like happy now to know कि exactly क्या केस है और ये कैसे सॉल्व हो रहा है. राइट. सो व्हाट्सएप बिजनेस API नेक्स्ट क्वार्टर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कहीं ना कहीं दिखेगा. ऑल्सो पीपल हु हैव क्वेश्चंस, राइट, चैट में लिखने से बेहतर है. चैट में आप मुझे नॉर्मल कमेंट्स प्लीज कर सकते हैं, बट क्वेश्चंस जैसे अवनीश जी ने भी लिखे हैं, क्वेश्चंस आप Q&A बॉक्स में डालिए ताकि बाद में उन्हें देखना इजी हो जाए हमारे लिए. राइट. This is the product roadmap. This is what we are bringing for you in Heyo. Now, before I give the stage to Satyam, the customer that we have here, the partner that we have here, एक छोटी सी चीज I wanted to highlight with you guys, the Heyo referral program. So most of you might have used it, but those of you who haven't used it, जिन लोगों ने अभी तक Heyo referral का फायदा नहीं उठाया है, आप Heyo में सेटिंग्स में जाके, रेफर एंड अर्न में जाके अपना लिंक अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नोन, बिजनेस एसोसिएट्स, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स और शॉप्स जो आपके एरिया में है उनके साथ शेयर कर सकते हो. एवरी टाइम यू डू दिस, आपको 200 क्रेडिट मिलते हैं, सामने वाले को 100 हेयो क्रेडिट मिलते हैं, जिसका यूज करके आप रिचार्ज कर सकते हो. आज की डेट में हेयो का प्लान सिर्फ 200 रुपए का है. सो अगर आप सिर्फ मान लीजिए 4 से 5 लोगों को भी रेफर करते हैं तो आपको हेयो अगले 2 से 3 महीने के लिए फ्री हो जाएगा. सो 2 से 3 क्या, 4 से 5 लोगों करेंगे, 4 से 5 महीने के लिए फ्री हो जाएगा. सो यू नीड टू लुक एट दैट. प्लीज चेक इट आउट, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें. आपके लिए बेनिफिशियल है. जब IVR प्रोग्राम आएगा
तो IVR प्लान आएगा, उस टाइम पे भी रेफरल प्रोग्राम के जो क्रेडिट्स होंगे आप उसको यूज करके कहीं ना कहीं अपग्रेड कर पाएंगे। दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। एंड अगर आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो लोग यहाँ पे बिजनेस ओनर्स हैं जिनका काफी बड़ा नेटवर्क है, who think कि if they tell about a product to somebody, people will purchase it, buy it. They can also become a part of the partner program and they can earn real money as much as 1400 rupees per referral. Not just the Heo credits, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट पार्टनर प्रोग्राम के अंदर आपको एक्चुअल अर्निंग हो सकती है Heo के साथ। सो एनीबडी हु हैज अ नेटवर्क हु थिंक्स कि हम ये कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द चैट, वील रीच आउट टू यू, वील टॉक टू यू डायरेक्टली। Now that's it for the Heo side. I know मैं आपको काफी देर से बोल रहा हूँ, we had 30 people around, 23 is there. We'll now move on to Satyam. So we have Satyam here. Satyam Shukla is a YouTuber. He's from Lucknow. He's also a business owner. इनका अपना वर्क करके एक चैनल है, बिजनेस है। So Satyam has been also a partner of Heyo Phone. He has also been a user of Heyo Phone. Satyam, I just want you to take like 2-3 minutes, talk about what you do. आप क्या करते हो, आपको क्यों लगा Heyo Phone डाउनलोड करने की जरूरत, आपको कैसे मालूम पड़ा, एंड देन आप जिन लोगों से बताते हो उनको कैसे बताते हो Heyo Phone से क्या हेल्प हो सकती है। Sir, first of all, good evening, Sana sir, and everyone. हाय हाय। And let me introduce myself. My name is Satyam Shukla from Lucknow, Uttar Pradesh. सो मैंने जो है हेयो फोन स्टार्ट करना शुरू किया अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 months एगो। तो वहां पर काफी चीजें, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं बेसिकली यूट्यूब या फिर यूट्यूब में या फिर गूगल एड्स में या फिर फेसबुक एड एंड मेटा एड्स वगैरह हम लोग रन करते हैं। तो वहां से जो भी हमारे पास लीड्स आती हैं तो उनको हम लोग, जैसे कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। और ऐसे ही हर बिजनेस में आप यूज कर सकते हैं हेयो फोन को। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि वहां पर लीड मैग्नेट वगैरह हम यूज करते हैं, तो वहां पर लीड्स आती हैं तो उस पर हम लोग कॉल अपने नंबर से ना करके हम लोग उस हेयो नंबर से कॉल करते हैं, जिससे हमको उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। साथ ही साथ हम लोग को वहां पर सारी चीजों का मतलब रिमाइंडर भी मिलता है, और साथ ही साथ उसमें रेटिंग भी मिल जाती है कि लोग रेट भी कर सकते हैं कि हमारी सर्विसेज कैसी लगी उनको, क्योंकि बेसिकली हमने वहां पर नंबर अपना दिया होता है, तो इसलिए नंबर्स भी वहां पर कॉल पिकअप करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उन लोग को, कस्टमर्स को। ब्यूटीफुल। एंड अगर आप जैसे आप एक छोटी सी सत्यम, और बिकॉज वी आर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हियर जो हमारी बात सुन रहे हैं, आई जी जस्ट वांट यू टेल कि आप हेयो पार्टनर ऑलरेडी हैं, आप ऑलरेडी काफी लोगों को हेयो के बारे में बताते हैं। सो हाँ सर जी। आपने मार्केट में अभी तक जो भी 2-3 यूज केसेस देखे हैं जिसमें लोग हेयो यूज करके काफी अच्छा यूज कर पा रहे हैं, वो किस तरीके के हैं? सर जैसे कि बेसिकली मैंने बताया आपको कि किसी भी प्रकार का अगर आपका बिजनेस है, मान लीजिए कि आप एक किराना स्टोर चलाते हैं या फिर एक फार्मेसी स्टोर है या फिर आपके पास कोई छोटा मोटा कॉल सेंटर भी है, तब भी आप हियो फोन का वहां पर बेसिकली यूज कर सकते हैं। जिससे कि वहां पर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके शॉप पे कोई लड़का बैठता है या फिर कोई 2-3 स्टाफ मेंबर्स हैं, तो वहां पर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कॉल पिक किया और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास मिल जाती है। उसमें आप बाद में वो सुन सकते हैं कि आप कस्टमर से कैसी डीलिंग हुई है, कैसी सारी चीजें हुई हैं, और कैसा मतलब वहां पर सारी चीजें वो आप देख सकते हैं वहां पर हेयो फोन के अंदर भी। और साथ ही साथ जो है दोबारा से आप उससे कनेक्ट भी कर सकते हैं जो कस्टमर से बात ऑलरेडी हो चुकी है आपकी। बेहतरीन। थैंक यू सो मच सत्यम। सो सत्यम, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने भी चीजें बोली हैं, बिकॉज आई थिंक दिस गिव्स पीपल अ वेरी डायरेक्ट इनसाइट कि कैसे एक्चुअल लोग यूज कर रहे हैं, सिर्फ हमारे कहने की बात नहीं है। आई थिंक आप 2.5-3 महीने से यूज कर रहे हैं, यू हैव ऑल्सो बिकम अ पार्टनर आफ्टर दैट। सो आई होप यू आर लाइकिंग इट। थैंक यू सो मच सत्यम फॉर टेकिंग आउट 2 minutes and like joining here and talking about it. So we'll move on now. Uh, and we move on to the quiz. So everybody, सारे participants, please, if you are not focusing here, please focus. अमित जी आपने हैंडल किया है, मैं Q&A सेक्शन में बिल्कुल I'll allow you to talk. Just stay with me for another 5-7 minutes, जिसमें we'll be playing this small quiz. This is all about Heyo. Heyo के बारे में ही है सारा quiz. So this is not ऐसा कोई जनरल नॉलेज का quiz नहीं है, ठीक है? सिंपल है, रीड द क्वेश्चंस, ऑप्शंस दोनों साथ में दिख जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन आपको चैट में लिखना है, बिकॉज आप बोल तो बिल्कुल भी नहीं सकते, वेबिनार है तो आप अनफॉर्चुनेटली इसमें माइक अनम्यूट नहीं कर सकते, बट आपको चैट में ABC या पूरा ऑप्शन जैसे भी आपको सही लगे, 1 2 3 जो भी आप डाल सकते हैं। द फर्स्ट करेक्ट आंसर विन्स एन Amazon वाउचर। वी विल ट्राई इट कि मैं आपको यहीं पे रिजल्ट बता दूं, बट बाय से विद इन 2-3 days, विद इन बिफोर दिवाली, यू विल हैव योर वाउचर विद यू, बेस्ड ऑन मेरी टीम जो भी असेस करती है और बैकएंड में चेक करती है कि किसने फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। इफ अगर सारी चीजें क्लियर है, क्या आप लोग एक बार हैंड रेस करके और फिर डाउन कर लीजिएगा,
बार हैंड रेस करके बता सकते हैं कि सब क्लियर है आपको कैसे करना है? राइट, सो वी हैव 3 4 5 पीपल जिन लोगों को पता है कैसे करना है. 7 8. गुड गुड. सो गाइज लेट्स गेट रेडी. तैयार रहते हैं. यू कैन आप अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं सब लोग. एंड आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट. हाउ मेनी पीपल कैन यूज वन हेयो नंबर? Up to 2 people, up to 3 people, up to 4 people. Right, so we have first answer from Kranti, which is B, up to 3 people. And okay, so we have the right first answer from Hari Krishnan PV, which is C, up to 4 people can use one Heyo number. 1 plus 3 होता है. आप 3 स्टाफ मेंबर ऐड कर सकते हैं और एक ओनर होता है. So this is C, up to 3 people, up to 4 people, sorry, can use Heyo Phone. All right. Now let's move on to the next question. Everybody ready? राहुल ने एकदम सही बताया है 1 plus 3, but आप थोड़ा सा लेट हो गए. So we have this for Mr. Hari Krishnan, who has answered it right. I'm going on to the next question, guys. Get ready. Which of these number series is available in Heyo? इनमें से कौन सी नंबर सीरीज अवेलेबल है हेयो में? काफी सारे आंसर्स आ गए हैं. अनएबल टू ट्रैक. बी, नन ऑफ द अबव. सॉरी अवनीश जी, थोड़ा सा गलत हो गया. Then we have Samsung SMA7366B. Sir, can you send your name to the panelist? Because आपके मोबाइल नंबर से we'll not be able to identify कि आप कौन है. आपका आंसर सही है. We just need to identify कि आप कौन है. तो can you please tell us your name? मैंने can you please take the name of Samsung user जो है यहाँ पे उनका. प्लीज आप Samsung यूजर प्लीज अपना नाम. हाँ, तेजस जी. Thank you so much, Tejas ji, for the right answer. We move on to the next question now. Get ready, everyone. Can you get individual staff rating on Heyo? Yes, no, I don't know. We have just talked about it. Dr. Avnish is fastest and right also, I think. He said yes. He said 1, which is correct. So it's a yes. Yes, you can get individual staff ratings on Heyo. अगर आपने फीचर अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, अगर आप C बोल रहे हैं कहीं भी आई डोंट नो में, गो टू द सेटिंग्स मेन्यू. ऊपर स्टार बना हुआ है, स्टार रेटिंग बनी हुई है, उस पर लिखा होगा, उस पर आप जाके टैप करें. यू विल बी एबल टू सी इंडिविजुअल स्टाफ रेटिंग्स आल्सो. Okay, so last 2 questions remain. We really hope that we see new winners here. So far we have 3 different winners. So everybody get ready. What is the cost for the Heyo yearly plan? 2400 plus GST, 1800 plus GST, 1500 plus GST या 1200 plus GST? We see this coming up. It's tough now. It's tough now. I hope Menak has got the correct answer. We see a lot of correct answers here, and I'm sure Menak will have the correct answer with him. We see a lot of them. Yeah, too many correct answers. Menak, I hope you have the correct answer with you, right? Just too many answers. Yes, got it. Correct. Great. All right, guys. The correct answer is D, 1200 plus GST. Currently, overall actual cost is 2400 plus GST, but we do not sell it for 2400 plus GST. Heyo Phone offers you the annual plan at just 1200 rupees plus GST. And in the next 2 days, today is 7th, starting 9th, we will be having another Diwali offer. If you guys have not already upgraded to the yearly plan, the yearly plan will be available to you at a bare cost of 899 rupees, not even 1200, not 2400. So wait for a couple of days. As soon as you see the offer, तुरंत upgrade कर लीजिएगा. I mean, this is the Diwali period, right? Everybody is giving offers. We too are, and you should make the most of it. Hari Krishnan ji is already on point. Avnish ji, this is it is unclear. I do get it, but we have been selling it for 1200 for so far. So yeah, it's okay. But you still won one. I think that should be good enough. Then
we have the last question before we move on to Bharat and Q&A and your questions being answered. Get ready for the last question, guys. Can you download call recordings from Heyo app? Yes or no? Nilesh says yes. A. I think Nilesh is the first one to answer. Correct. Beautiful. Nilesh ji is the right person to answer it and the first person to answer it. Avnish ji also answered it correctly. And Avnish ji, you might see it on your screen first, but we are going by our screen. And yeah, as far as our screen goes, it is Nilesh who said it first. So yeah, this is how it is. But it's a fun game. It's a fun game. I think more than the competition, it is more about how we are coming together and playing this and talking about something that we all use. एक हेयो फोन है जो हम सबको कनेक्ट करके रखा है. हम बना रहे हैं from my team, me, Bharat, Menak. We are building it, and that the others here, everybody else is using it. So we are more than happy to be a part of this family. All right, so this is where the Q&A round ends. We'll move on now to the Q&A section. So that was the end of the quiz round. We move on to the Q&A section. Now let's take the questions which are already in these Q&A box that I have a lot of questions from Avnish ji. Avnish ji, I'll take up your questions one by one. Here, Sunil. Thank you. Sorry? I can take the Q&A session. Yeah, please. So Bharat here, guys, I'll just introduce him in a moment. Bharat here is the head of product at Heyo Phone. He's the man, he's the mind behind developing every other feature, every other thing that you see on Heyo Phone, every other positive change that you see on Heyo Phone. So this person here will be answering all your questions. I leave the stage to Bharat now. Go ahead, Bharat. Thank you, Sunil, for the introduction. And I think the big credit goes to the people like who has joined this call from where we get the insights, inputs. I think a lot of input insights come from you guys where we get the inspiration what to build next. So I'll pick questions one by one. So first question is from Dr. Avnish Mishra. Is there any option to disable Heyo sender ID on SMS? So I think, if I'm not wrong, Avnish, you are talking about the call rating SMS that goes after every call. If that is, I think, yeah. So basically, right now, I think your expectation is that we send it from your number rather than sending from a Heyo sender ID. So it is against the TRAI regulations. TRAI basically gives, like, we are a company, we can send it from registered sender IDs only, any SMS. Since we are sending it on your behalf, we can only send it from the registered sender IDs, in this case, which is Heyo or a My Operator sender ID. That is why we can only send it through our sender IDs. However, there is one point to it. Like, once we launch the WhatsApp APIs, then what can happen is we will be providing certain automation features where you can, like, if you link your WhatsApp business WhatsApp APIs on Heyo, you will be able to send WhatsApp for rating from your number to the consumers on WhatsApp. So that will be additional benefit which you can achieve once WhatsApp APIs are live. Bharat, in chat, Avnish is saying he has DLT, which is again the SMS sending platform. They have their own DLT, they have approvals. Can they still not send it from their ID? Since we are sending it, we can we can only send it from our IDs. And like, there's some gray area around it. Like, we can send it from other registered IDs also, but right now we want to bypass that gray area. We will send it only from our registered sender IDs. Correct, and I think that makes also sense because it is a Heyo number, right? We are the ones who have to comply with the TRAI guidelines, right? So that's how it is. However, probably in near future, maybe there is a solution which is not so great where you can develop this and provide this to people. Okay. Can we do broadcast or IVR broadcast OBD? Not on Heyo. For, like, if you want to do OBD broadcast, I think there is one, our parent product, My Operator, it provides that functionality. But on Heyo, we don't provide it. Once we launch WABA, which is WhatsApp Business APIs, then we will be providing the WhatsApp broadcasting option on WhatsApp. Any white label possible to resale, since as a white label? So right now, a white label solution is not available on Heyo. No plans for it also to build it at this point of time. We want to keep our branding with us and sell it in the market.
Any? Let me just open. So white label is possible. I've already answered that white label. I don't think we'll do in the near future. We want to keep our Heyo branding and we want to sell this solution as a Heyo at Heyo branding only. Sanat, you're on mute if you're Yeah, speaking. I'm saying we have the rest of the questions in the chat section now, I believe. So we'll take them from there. As for Dr. Avnish, we can have a one-on-one discussion with you about these multiple things that you're talking about. Is it possible to integrate call via CRM? Bharat, I think you can take it. Yeah, call, we can do it, but again, not in our plan at this point of time. Right now, CRM, we have not done many CRM integrations. If you want to go through CRM integrations, then the right product for you is My Operator, which have these integrations live and running. So the idea is that we are able to provide it at such a cheap price point because we have stripped down a lot of features in it. If you want to achieve a lot of CRM integrations, you have more than 5 users, you you want to do bulk broadcasting on your calls, then My Operator is the product for you, not Heyo. Again, Sanat, you can reach out to Sanat or Manak. They will connect you with the right My Operator folks to help you get your solution. Okay. I think one common piece is WhatsApp. I'll just clarify on two things. So there are two kind of solutions that WhatsApp provides. One is obviously the app, WhatsApp app or WhatsApp business app. Second is APIs. So we are making progress on both the fronts. We are talking to the Meta team to whitelist Heyo number for using on WhatsApp and WhatsApp business app. This is point one. Point two in Baba, which is WhatsApp business APIs. We have started working on it. We have hired the right team now, and most likely in the next 3 to 4 months, we are looking forward to launch a phase one in which you will be able to communicate to the customers through WhatsApp APIs within Heyo. By when is WhatsApp all the solutions expected, Bharat? Most people want to ask like Q1 2024 primarily. So one thing is WhatsApp app and WhatsApp business app. That dependency is on Meta team. Right now, it's on a Meta team being such a large organization. It's very difficult to get a timeline from them. But for VABA, what we're targeting is Q1 of 2024. All right. That sounds right. Is it possible? Can I make Heyo API? So as long as you don't need anything from our side, I think you can do pretty much everything. You can like dissect the Heyo application if you want. But as I did not understand the question. Is it possible? Can I make Heyo API? What does that question even mean? Yeah, I'm just dropping. So Avnish, I'm just dropping my colleague's Heyo number for you, where he has his WhatsApp active. It was one of those WhatsApps which were activated long back in the initial days of Heyo. Please connect with him directly on this, and we can set up a meeting where we can answer these questions of your. It's all right to have any number of questions, but I think rather than making it all about one question, we can take it separately in a separate call and discuss. Right. I get it. You are somebody who knows the tech, so we'll probably talk about it in a separate ground. But personally, just Avnish ji, I want to make it clear that we want to sell Heyo as our own branding. We don't want to make it expose our APIs, or we don't want to sell it as a white label solution. We want to sell this product with Heyo branding. So if that is your intention, I think that will not be the good thing to do. I think that won't be a good thing to do. Yeah. Cool. So Bharat, we will take any other questions from Avnish ji directly on one-on-one. He can ping Manak, and since he himself is a developer, maybe you can. Yeah, I figured out that he's a developer. The kind of question that he's asking. Yeah. So that's what I think. He's too techy. All right. We have one question from Kranti. Consider reactivating the old Heyo number if we miss payment after 20 days. So I'll tell you, one of the reasons that we are able to provide Heyo at such a cheap price point is that basically we wait for a certain period of time, and after that period of time, we assign that number to someone else. Now that period of time is kept as 30 days in Heyo. If you don't make the payment within 30 days period, we wait for 20 more days, I think 15 more days, and after 45 days, like from the time you miss your payment, after 45 days, we assign that number to someone else. Now that since the Heyo velocity is very, very high, there's very high chance that that number is automatically assigned to someone else. So getting the same number again, 20, like within a period of 30-45 days is possible.
However, if you miss it for if you want it after a long time, it will not be possible for you. There are two caveats to it. One is that one feature that we are launching soon is that if you have made 2 or 3 payments, rather than waiting for 45 days, we will be waiting for 90 days for you, because we know that you are a kind of loyal customer to us, or a customer who might want to get the same number again. So if you have made 2 or 3 payments with us, we will wait for a larger period of time just for you, and for a user who have not done any payment for, we will wait for a smaller period of time. So basically you get rewarded for your loyalty, kind of thing. Correct. And Kranti, we give you enough reminders about payment for the numbers. I think 3 दिन पहले से Bharat, we start telling people through the app, through our WhatsApp messages that your plan is expiring, you need to renew it. So we really suggest And that you can opt for long-term plans. Now, like if you are lazy or finding it difficult, the best option is to opt for long-term plans at correct. half of the cost, 50% of the cost. Seamlessly, your app will keep running. In fact, even lesser, more than 50% discount is what we are giving in the Diwali offer. So in the next 2 days, Kranti, if you just renew it once, you are done for the entire year. You don't have to think about it again, unless you want to upgrade it to the IVR plan, which is coming in December. So that is one question answered. Then we have something from Chetan again. Choice number is possible. Bharat, please go ahead. So it again, it will require some effort from us, but the point is that we can give you certain options for sure. But what we have realized in the past now, there is a lot of confusion between the users that they want this number, they want this number. It is something that we are still speculating at our end whether to give or not, because there are certain downsides to it also. But I'll once I have something concrete on this, I'll let you know. But for the time being, it is not coming in. It's in 2 or 3 months. We had our discussion internally on this, but we decided not to give this at this point of time. No, correct. And I think this, again, it all comes down to the price point at which we are offering here and the kind of audience we are dealing with. That it makes lesser sense. These costly numbers, these VIP vanity numbers come at a very high cost compared to Heyo, where Heyo is just 200 rupees. Vanity numbers, as far as I last remember working with my operator sales guys, it was close to 5,000 rupees for the basic initial numbers, Bharat, which was like not even a proper series. So even for those numbers, when people are paying 5K compared to what they're paying for the actual service, the difference is very large. That might not happen. One has to understand that we are able to provide it at such a cheap price point because we have stripped down a lot of features. So this is the key driving principle for us, that we want to, like, all the expensive features that you see in the market, the product is expensive because they've built all of those expensive features. So we want to build it in a way which is like the most relevant features at the most effective price point we're offering to you. Correct. All right. I think one question which is I want to make from Hari Krishnanji. I want to make it possible for all staff to access the contact names and corresponding customer phone numbers in the app's call history. Is it possible? So numbers, though, it is still visible in my opinion. So because, like, let's say you have staff one has called, staff to want to see the number, they can see it. But regarding the contact names, they can only see it from if the number is saved in their local call directory, local contact directory. This is the current working. However, in the near future, not like in 3-4 months now, not 4-5 months, we might come up with a concept called Heyo directory. So a directory which is maintained by Heyo. Let's say that a call happens either by staff 1 or staff 2 or staff 3 or owner, and a contact is saved on any of the phone devices. You will be able to see the contact number in a Heyo directory, so that you don't have to save the numbers in your local contact directory. So we will come up with a feature, but it is just the priorities that we are working on at this point of time. Correct. We had one question earlier, Bharat, can we start SMS service through Heyo number and like to get OTPs and everything possible? So virtual number doesn't provide SMS. Yeah, technically it is not possible to provide SMS on top of virtual numbers. So if we could do that, that will be like the top of our list, obviously, but it is technically not possible. All right. So we have, apart from these questions, I want to know about the call transfer option. Very available feature, very less used, but very available feature, I think. Yeah, I think it is less used than we expected. But so you can, let's say that you want to call, that you attended the call, you want to transfer the call from one staff to another, like from you to another staff. What you can do is, like, every person has a code which you can see under their settings section.
So you can press star 2, press that code, the call will be redirected to that person, and then you can cancel the call yourself. So that way the call will be transferred. And if there's a FAQ also built on top of it, so you can just go to the Heyo FAQ section. You can search transfer. You will see how to do it. Correct. Any other question, guys, we have in the Q&A section? If we need more team members like 10, 15, what do we do? I think we The go right to my product for you operator. is my operator. So again, understand, like I'll answer very honestly this, that giving it at a 199 price point, we cannot afford, let's say, 2000 calls, because it will not come at a price point of 199. If you want to achieve this for 10 people, either we increase our price point, or the way we think is that the higher price point product for us is my operator. Ideally, Heyo and my operator should be very seamlessly integratable, which we are working on. But the right product for you, if you have 10 staff, is my operator, not Heyo. Heyo we will support for 5 or 6 people at max, but beyond that, my operator is the right product. Correct. And one more thing to add here, when we talk about higher price points, or forget about the price point over here, more importantly, 10, 15 people, if you're already dealing with that level of a team, you need much more than what Heo can offer overall. Exactly. Because That's you a need your very valid CRM, point. you probably will eventually, if you're not asking today, you will ask for a CRM integration, because how are those people maintaining that track record, right? They're using a CRM. So eventually you'll ask for that. Now we will not be able to develop that, right? End of the day, everybody over here, I think you all will agree that if we start adding every such high level feature to Heo, it will eventually become another my operator, and that is something we already have as a product and offering. So if you ever feel the need to go beyond the possibilities and capabilities of what Heo can do, अगर आपको कभी भी लगता है कि यार Heo से मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे इससे कुछ ज्यादा powerful चाहिए, then definitely talk to us about my operator. We have a very big team over there. Immediately we'll assign a advisor to you, और वो आपको अगले एक दिन के अंदर सब कुछ करके दे देगा. So that is how this will be done and can. हाँ, अवनीश जी का मानना, तो अवनीश जी आपको जो अपने CRM डेटा पहुंचाना है, this feature is on my operator. I don't know, if I may, we can connect separately. That I think given your questions, my operator is the right product for you rather than Heyo at this point of time. Correct, probably yes. We have Chetan a question. Outgoing calls cannot be transferred, but incoming calls can be transferred. So while we're making a call, we cannot transfer it to somebody else. Outgoing calls cannot be transferred, but incoming. Yes, that is true. I think it's a good point. We can think around it. So I've not even thought about it, but I'll think about it. But something to something. If you are giving I think if you are giving man of the match award, we could have given it to Chetan to highlight something that we need to probably think about next. Thanks, Chetan. This is something interesting that we have got. We'll probably see how we'll be able to figure a way around this. Okay, so function, yeah, we have the same question here. Call availability, time schedule hona chahiye. Again, something that is available in my operator. So I think I'll give a blanket answer to this, Bharat, over here. All these features that most of you guys are asking for over here are available with my operator. See, my operator is pretty much a, pardon my non-technical background, it's a pretty much full stack solution for communication services. आपको कुछ भी चाहिए, anything you want customized, and we work with partners like Zoho, we work with partners like Lead Squad, Freshworks, Odoo. For all these people, we create very custom software. See, Lenskart has their 1500, 1600 stores using my operator. Of course, they're using a very custom software, right? So we can do all of that, and one has to agree that custom built things or a little more durable high-end things always come at a higher price point. So while we are not implying कि Heyo Phone सस्ता है तो अच्छा नहीं है, Heyo Phone अपनी cost के लिए best है. And then if you want to go beyond that, the end of the day, अगर आपको pitch पे मैच खेलना है तो आप ये probably एशियन के जूते पहन के पिच पे मैच खेलने नहीं जाते. That's how it is, right? If you want to do a rally racing, you don't go out with an alto. So that's how it works. For the price, you get a good thing, and for the next layer of price, you get the next best thing, and that is how it works. I think very insightful questions from the team.
Totally. Can you call at this? We can definitely call you, Avnish, at this number. We already have it with us now. I'll still, Manak, can you please take a note of this number from Avnish, and we'll definitely look into it. It was really amazing for startups, no doubts. Anytime helpline number. Bharat, I think. Yeah, so we have a chat, like not a helpline number. So we can you can reach out to us on chat, like within the Heyo app. You can contact us on chat. We will answer you within 24 hours, less than 24 hours generally. If you reach out to us between 9 a.m. to 9 p.m. So chat is a very effective option these days. Most of our startups are adopting this option over calls. So we have also opted for chats. Correct. This is good. All right, and a couple of people, Kranti, thank you for appreciating the initiative. This is what we are trying to do in this community meetup. Dr. Abhijit, what do you mean by sticky reminders? Bharat, I think more than like speaking and chatting, I think this will be much more good if we take it offline. I think more than anybody else. So for us, most of us are laymen over here when it comes to tech or deep tech. Whereas I think Dr. Avnish, you guys will understand each other's language much better. So as I said, we have Avnish's number. We will eventually give him a call, set him up, and talk about it. Call availability scheduled to receive call option. You can also have turn a call on and off. availability on, no, but I think he asked for a schedule. Like he can schedule it between 9 a.m. to 9 p.m. every day, something like that. Yeah. So I think we can build it. It's not a very something again the priorities for us, but for the timing, I think the easiest way is to, like, if your shift, like if your star shift is 9 a.m. to 9 p.m. or something like that, they can enable it once in a day, then they can disable it once in a day. It's not such a big task. Single click 2 times in a day, they can always do. Yeah. I mean, see, even in the case of virtual companies, people who are working remotely, they have to log in and log out every day, right? So you don't automate that. सुबह उठ के 9 बजे उन्हें एक हो पे कहीं भी जाके log in करना पड़ता है. So similarly, they can just open their Heyo app, turn the Heyo app on, and that is it. We have renewed for 1 year plan. If we pay for Diwali offer, will our plan be extended? So I think there is one issue with which we are working on. Like if you have renewed, opted for a long-term plan, you can't opt for a long-term plan again. So that is something we will be fixing later. So, but if you have opted for a long-term plan in the past and it is still active, so you won't be able to opt in, pay for the Diwali offer again. I think Chetan, hold on to whatever you have paid for right now. Eventually, you will see better plans coming in, better features coming in. So maybe then you will have a definite opportunity to renew your plan and opt for the larger one. And these discounts keep on coming and going, so you'll find them around sometime or the other. Right. One small request to Mr. I'm not sure if it's Mr. or Miss. One small request to Kranti and Hari Krishnan. If you guys, Manak, can you please drop in your WhatsApp, your Heyo numbers WhatsApp? I would love to get in touch with Kranti and Hari Krishnan directly. I really hope that you are enjoying your Heyo experience. So if you could give us a small testimonial, it will be very helpful. Just like today you heard Satyam talk about the application, which gives you, some level of motivation, intrinsic at some level. Ki haan, we are using a good thing and everybody is liking it. So customer testimonials definitely help us a lot in separate various occasions. Would love to connect with you guys, get to know from you what you are thinking about Heyo, कैसे use कर रहे हैं, what use cases you are solving. Maybe that will give us more insights. So Manak, please drop in your number and or take Kranti's number. Kranti's number is here, and we would love to take a feedback of how you do. Of course, Avnish, you would do it with you too. We would love to make a video or a testimonial video with you. And वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, we are setting up a call with Avnish soon enough, so that we'll have Bharat in it, we'll have our team with it, that you guys can talk your techie brains out and maybe solve larger problems, something that can be done with him. So yeah, I think this is it. This is where we can. That's totally fine, Kranti. We actually are looking for somebody in Telugu who can give me a good testimonial. So I think good for us that you came to the webinar.
And yeah, it's about time. It's 5. It was a very insightful session. I think, Bharat, you have already said it, that this was one of the best things that happened lately. Yeah. So I think, yeah, I mean, this is very enjoyable. What is the process of getting the gift now? Please hold on. Please, stick to your seats, or you can get up. We will just compile our first answers. Dr. Avnish, you being one of them, and we will give you your Amazon vouchers via email soon enough, before we leave for Diwali. That is within this week itself. We'll just compile it after this meeting and get back to you on that. We anyways have to talk to you, right? So we're not going away with your gift. Don't worry. So cool. All right, guys. Thank you so much. Happy Diwali to all of you once again. We really look forward to seeing you again in the next CMU. हमारी पूरी कोशिश रहती है that we do it once in a month. Soon enough, we'll be planning something in different cities, small meetups. So let's hope we see you there. And yeah, that's it for now. Thank you. Thank you.